Mrs. Bright is no more in the world now. Quite shocking to Klein, her son, who cannot get a word from the lips of his mother now, that I have forgiven you, my son. I have forgiven you, my son. ये कितनी कड़ी सजा है किसी भी शख्स के लिए कि कोई आपसे नाराज गया हो और इतनी दूर चला गया हो कि अब वो वापस आएगा ही नहीं आपको माफ करने के लिए। इससे बड़ी और कड़ी सजा नहीं हो सकती। So this is the punishment and the sweetest, one of the sweetest punishments for any of the persons in the world, that any of your nears and dears is no more in the world, but you wish him to be there to forgive you, to forgive your sin, to forgive your crime. Just take up the sentence she has spoken before. A boy, tell your mother that an old woman, tell your mother that there was an old woman cast off by her son. वो हो जिसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया. So now Klein gets back. He is now quarreling with his wife Justitia, and he feels that it is Justitia who is responsible for the death of his mother. And he says, Justitia, stand away before me and confess everything you have done. Justitia is not ready to confess that she is responsible for the death of his mother. Now Klein is going to do what he says. I am leaving this house and I am going to the house of my mother. This is the return of the native. This is the return of the native. When Klein leaves for the house of his mother, Justitia leaves for the house of her grandfather. Love is shattered. Love is gone. Where love has gone, such a fragile relation. This relation was built on the basis of love. So love is such a weak foundation to construct the relations. Such a weak foundation. Love is such a weak foundation to construct the relation. But we have to see, love is not actually the weak foundation. This is to see what was the cause of your love. Was it love that generated love? Was it love that manifested love? Or it was something else that manifested love? It was beauty that manifested love. It was wealth that manifested love. It was greed that manifested love. If greed, beauty, wealth, these are the properties which have manifested love, then this love is a weak foundation, the weakest foundation. But if love is the cause of love, only love is the cause of love, then it is really such a strong, such a powerful, and such a concreted foundation which can never be twisted. So it's you now who are to decide what was the cause of this love. इस मोहब्बत की कॉज क्या थी? एक तरफ ब्यूटी थी और दूसरी तरफ ऑब्सेशन थी. एक तरफ ब्यूटी थी और दूसरी तरफ ऑब्सेशन थी. सो लव वाज टू द नीदर साइड. Love was to the neither side. Love was not the cause of love. मोहब्बत कभी करें, ये मैं कह नहीं रहा, एक जनरलाइज्ड बात कर.
अगर कोई मोहब्बत करे तो ये जरूर गौर कर लिया करे कि मेरी मोहब्बत की बुनियाद, मेरी मोहब्बत की वजह, मेरी इस मोहब्बत की कॉज क्या मोहब्बत है या कुछ और। अगर कुछ और होगा तो बाद में यही होगा, लियादे जेड़ियां मैं तेन चीजां कहनिया नहीं ते घर सांभ लै, मैं पेके जानी है ना। फिर वो कहेगा पैर तू गली तो बाहर पाके देखनी, तोड़ दे लत्ता पेके जाके देखनी। और अगर मोहब्बत करने वाला ये पहले कहे कि छत की कड़ियां जांच लो, दीवारों दर को देख लो, मुझको अपनाने से पहले मेरे घर को देख लो, then it's, and even then if she says yes, I have looked into your house, I am not going to love your house, I am going to love you, my dear. Okay, then it will last long, it will last long. But this kind of love rarely exists, rarely exists, rarely exists. मैं समझता था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। अब ये क्या है, ये क्या लव है, ये भी तो ब्यूटी है ना। इसीलिए तो फिर कहता है बाद में, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वो ये क्यों कहता है, क्योंकि इसकी मोहब्बत के जो सारे हमने अल्फाज देखे हैं वो उसके आरज़ो रुखसार तक ही घूमते हैं। He does not go beyond that, does not peep into her soul. और ये दूसरी तरह मोहब्बत है कि दुनिया मैनू आखन लगी हीर तेरी काली है, हीर नहीं सॉरी, दुनिया मैनू आखन लगी लैला तेरी काली। हाँ जी, दुनिया मैनू आखन लगी लैला तेरी काली, मैं उन्होंने एहो आखा, मैं आखा अगो तेरी अख नहीं वेखन वाली है, मैं आखा अगो तेरी अख नहीं वेखन वाली, वो नहीं काली, तुम्हारी आंख में कोई प्रॉब्लम है। ये है वो मोहब्बत जो खूबसूरती से मावरा है, जो खूबसूरती सिर्फ आरज़ो रुखसार तक नहीं महदूद रखती, बल्कि उसका नाम ही खूबसूरती का उन्वान बन जाता है उसके लिए। हाँ हाँ, तू ना सही और सही और सही और सही, ये है मोहब्बत। उकता गया हूं एक ही चेहरे की दीद से, जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो, है ना, ये मोहब्बत। अब ये मोहब्बत की बुनियाद ठीक नहीं थी आफ्ताब, ये जस्टिशिया और क्लाइम की मोहब्बत की बुनियाद ठीक नहीं थी, इसीलिए दोनों चले गए, रिटर्न ऑफ द नेटिव हो गया। लेकिन उस वक्त गया क्लाइम, नाउ इट्स टू लेट टू मेंड। क्या अब की सिचुएशन, अगर ये कुछ अर्सा पहले चला जाता, दैट वुड हैव बीन अ रेमेडी,
remedy against all his ailments. But this is not going to be a remedy. अब ये आ गया वहां से, वो अपने घर चली गई, अपने दादा के घर. They have started another life. Klein feels that he is responsible for the death of his mother. He is living all alone in the house, looking at the walls of the house, terrified by the silent and sullen environment. Terrified by the silent and sullen environment. The silent echoes in the house. There's only one voice. There's only one voice that rises in the house, and that is the shrieks of Klein. अब क्या है? अब तो तन्हाई है. अब एक दिन सोचता है, काफी दिन जब गुजर जाते हैं, कि जो कुछ होना था वो तो हो गया. Why should not I reconcile to my wife? Why should not I reconcile to my wife? क्यों ना सुलह कर लूं? उसे एक खत लिखता है. Writes a letter to Eustacia. Eustacia, let's start another life. Come to me and we shall start another life. And he gives that letter to the child, to our child. एक बच्चे को देता है खत गांव के. Says, ओ बच्चे इधर आओ, वो घर देखे बाजी यूस्टिशिया का? कहता है हां जी. ये लो 5 रुपए, ये बाजी को खत दे. अब ये शाम का वक्त है. बच्चा नॉक करता है. Captain Y comes out of the house. Yes. Says, this is a letter for Baji Eustacia from Klein Bhai. From Klein Bhai. Klein ने लेटर दिया है यूस्टिशिया के लिए. He holds the letter. Eustatia's room is on the first floor. And when Captain Y looks up, he finds that the light of Eustatia's room is switched off. If it is candle, then the candle is off. He feels that she might be sleeping right then, and the letter might be handed over to her the next day. इस ख्याल से कि खत उसे मैं कल दे दूंगा, वो सो रही होगी, वो लेटर टेबल पे रख देता है. लेकिन ये सोई नहीं. She has chalked out a plan with Valdim to flee from Acton Heath. She has chalked out a plan with Valdim to flee from Acton Heath. She has left the house, waiting for Valdim on the bank of canal. एक केनाल के किनारे खड़ी होकर वेल्डीव का इंतजार कर रही है, जिसने इसे एग्डन हीथ की मुसीबतों से निकाल देना है. अब देखिए, हु इज द वाइफ ऑफ वेल्डीव? Thomasin comes to know
What plan has been prepared? बीवियां बहुत तेज होती, आसानी से नहीं जाने देती, बहुत तेज होती है। हम यहां खड़े भी यही ज़हन में रहता है कि वी आर बीइंग वॉच्ड। तो इससे पता चलता है, she goes to climb and says, climb. Valdiv is going to take Justicia forever to Paris. This is settled between these two and he has left the house. अच्छा, इस दौरान में सॉरी कुछ चंद दिन पहले ना, चंद दिन पहले इनके घर एक बेटी पैदा होती है, वेल्डिव एंड टॉमसीन के घर। ओके, अब ये जब क्लाइंट को पता चलता है तो ये भी वहां जाता है जहां पे यूस्टिशिया खड़ी इंतजार कर रही है। लेकिन जैसे ही वेल्डी पहले पहुंच जाता है सबसे, यूस्टिशिया उसका इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही पहुंचती है तो ये नहर में गिर जाती है। शी फॉल्स इनटू द कैनाल। नाउ नोबडी, द क्रिटिक्स आर डिवाइडेड in different opinions. A group of critics is of the view that Justicia has deliberately jumped into the canal just to commit suicide. Means that she has committed suicide. She has deliberately jumped into. But some other critics say that no, it was just the slip of her foot that she fell into the canal. जैसी वेल्डीव दूर से देखता है, ये भी पीछे जंप कर देता है उसे बचाने के लिए। And Klein comes to know, he too runs after and jumps into the canal. Jumps into the canal. There are some divers. Divers समझते हैं क्या होते हैं? गोताखोर। वो पीछे इनको बचाने की कोशिश करते हैं। They could bring only one person out, and that is, कौन होगा? That is Klein. That is Klein. Klein को बचा लिया गया, वो दोनों मर गए। अब ये क्लाइंट के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। He is sorry why he is living now, because he feels that he is responsible for the death of two women. One his wife, while the other, not Thomas, his mother, his wife and his mother. Now he cries out and he decides to become a preacher. He starts preaching Christianity. He starts preaching Christianity. In one of the movies, he has been shown standing on the top of a small hill, and there are so many people sitting in front of him, and he is delivering them a lecture on Christianity. He has become the preacher. He has become the preacher. अब ये जो टॉमसीन है, अपनी बेटी का नाम देखिए कितनी आयरनी है। अपनी बेटी, she names her daughter Justicia. She names her daughter Justicia. Now Riddleman again comes to Thomasine now. Riddleman, you remember Riddleman? Degree-Wen. His real name is Degree-Wen. He comes to Thomasine. Says Thomasine, my heart is still craving for you as intensely as ever. My heart is craving for you, still craving for you.
as intensely as ever. इस मोहब्बत की बुनियाद क्या है आप बताइए? सॉरी, लव इज द कॉज ऑफ लव. और ये देखिए कितना एवरलास्टिंग है. कितने साल गुजर गए, क्या कुछ हो गया दरमियान में, बट लव इज स्टिल अलाइव. लव इज स्टिल अलाइव. सॉरी, तो अब ये प्रपोज करता है, कहती हो आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल. Thomasine and Degree are coupled together, are wedded together, but Klein is still there in the climate, in the house of repentance, in the house of pains and pangs, and in the house of doles without delights. ये नॉवल तो हो गया तमाम, but it has left some indelible questions or impressions upon the minds of the readers. कि अगेन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन, जब से दुनिया बनी है ना, एक ऐसा सवाल है जो हम जैसों के लिए अनरिजॉल्व्ड है. बहुत सारे ऐसे हैं आए हैं इस दुनिया में जिन्होंने इस क्वेश्चन को भी रिजॉल्व कर दिया, लेकिन हमारी समत गलत है ना, इसलिए हम इसे तय नहीं कर पा रहे कि व्हाट इज लव, व्हाट इज लव, और हमारी जिंदगी में इसकी कितनी गुंजाइश है. और क्या ये वाकई एवरलास्टिंग होता है? इज इट रियली एवरलास्टिंग, या हालात और वक्त की गर्द इसको धुंधला देती है? इज इट एवरलास्टिंग? बट इफ इट इज कॉज्ड बाय लव, अगर इसमें जरा से भी कोई और तलब या ख्वाहिश आ गई, जैसे हम अभी कह रहे थे, पैसा, लालच, क्लियर, ब्यूटी. यस, आप कहेंगे ब्यूटी कैसे? ब्यूटी तो जनरेट्स लव. ये एक बड़ा अजीब सी बात है जो मैं कह रहा हूं कि इवन फेशियल ब्यूटी, इवन फिजिकल ब्यूटी, इफ इज द बेस ऑफ योर लव, इफ इज द फाउंडेशन ऑफ योर लव, दैट इज वेरी वीक फाउंडेशन. जी, yes, she was too much passionate for her dream that she wanted to go out. We can say that she feel herself suffocated in that society in which she was living. yes, And she wanted an escape from that norms, that traditions, that aspects of society. yes, sure. So, But love, if you use love as a tool to remove your suffocation, as Justitia has done, Justitia is using her love as a tool to get rid of her suffocating environment, then this is not love at all. Love is a passion that is free from all your desires. Desire is only
that overpowers is love. मैं ये नहीं कहता कि उसकी डिजायर ही ना हो, मैं ये कहता हूं कि अपनी मोहब्बत को अपनी किसी भी और ख्वाहिश की वजह आपकी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल किसी ने तुर्की जाना लेडी रिसेंटली तो उन्होंने तुर्की जाना है तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज एनी कैंडिडेट शी इज गोइंग टू बी मैरिड शी गेट मैरिड इन दैट टाइम सो दैट शी कैन गो टू तुर्की. तो इज इट लव? अकॉर्डिंग टू हर इज लव. अकॉर्डिंग टू that mean to say according to her she chose that when only love and marriage too are quite different things. If she chooses someone for her marriage alliance, it doesn't mean that she has chosen him for her love partner as her lover or beloved. So you must draw a dichotomy, must draw a line between love and marriage. Marriage is a lawful union, is a logical union, is a social relation, is a religious relation. Am I clear? But as far as love is concerned, you cannot name any of these. मोहब्बत को तो आप कोई नाम नहीं देते सिवाय मोहब्बत के. मोहब्बत का और कोई नाम नहीं सिवाय मोहब्बत के. For Justacia, love was not her concern. She made an agreement. That she was a she made an agreement that when she will acquire, when she will achieve his dream. ये तो आप कह रही है ना, है सही था, लेकिन गहनाए हुए चांद की रोशनी में जो इसने वादे वईद किए थे क्लाइंट से, वो तो मोहब्बत का था. Am I clear? अब ये ज़हन में रखिए कि कुछ चीजें, 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनके नाम पर इंसानों को इस तरह ब्लैकमेल, इस तरह एक्सप्लॉइट और इस तरह चीट किया गया है और किया जा रहा है कि आप उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं ला सकते. मिसाल के तौर पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन द पीपल आर एक्सप्लॉइटेड. नंबर 2, in the name of science the people are exploited. साइंस के नाम पे भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुई है, कभी बात करेंगे इसमें. नंबर 3, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे साथ हो रहा है. इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी द पीपल आर ऑप्रेस्ड. द पीपल आर ऑप्रेस्ड इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी. Yeah. Yes. Yes. And number 4, in the name of love, people are exploited and oppressed and tortured. ये ऐसा जालिम नाम है मोहब्बत का, लोगों के परीक्षे उतार दिए जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते वो बेचारे. वो सही कहा ना किसी ने कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. हाँ, इश्क ने, वरना हम भी आदमी थे काम के. चले, कल इंशाल्लाह इस पे मजीद बात करेंगे.